Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs the 41st GST Council meeting via video conferencing. The Council to discuss a single-point agenda of compensation to states. RBI Governor Shaktikanta Das says that measures taken to support the economy during the COVID-19 pandemic will not be removed soon. The Reserve Bank indicates further cuts in interest rate. Monsoon fury across the country. The central team visits flood-affected districts of Assam. Jammu and Gujarat reel under heavy rainfall. Heavy rains forecast for parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand. Some respite from the floods in Bihar. The Health Ministry says that many states and union territories have better COVID recovery and lower fatality rates than the national average, even as the national recovery rate reaches 76.24%. The global tally of COVID cases crosses 2 crore 43 lakhs. Iran ends the long standoff with the International Atomic Energy Agency and allows inspection of 2 of its suspected former nuclear sites. Iranian President Hassan Rouhani tells the IAEA chief that Iran will continue its cooperation with the UN nuclear watchdog. And the destructive Hurricane Laura has wreaked havoc on the Caribbean islands. 24 people killed, hundreds homeless, millions evacuated from Texas and Louisiana as the hurricane makes landfall in the US. Namaskar and welcome to the news. My name is Mark Lynn. Let's begin with our top story. The Finance Minister Nirmala Sitharaman has chaired the 41st GST Council meeting. She did so via video conference from New Delhi. And this meeting was attended also by the Minister of State Anurag Thakur, besides the Finance Ministers of states and union territories, as well as senior officers from union government and states. It was a single agenda meeting. In fact, it discussed the GST compensation to state governments. The centre had been releasing compensation to states in tranches. Compensation worth 1,15,096 crore rupees was released for the April-November 2019 period, and also the second tranche of 36,400 crore rupees was released for the December 2019-February 2020 period. This is for the states and union territories. The centre had released 69,275 crore rupees for the 2018-19 period and also 41,146 crore rupees for the 17-18 period as compensation for GST. Now, addressing a video conference today, the RBI Governor Shaktikanta Das has assured that the RBI is well prepared for the economic battle against COVID-19. All shareholders' interests, good governance, effective risk management, all this has been taken care of. And he said that the moratorium on loans also was a temporary solution in the context of the lockdown. Resolution framework is expected to give a durable relief to borrowers facing COVID-19 related threats. Let's listen to it from him. While the moratorium on loans was a temporary solution in the context of the lockdown, the resolution framework is expected to give a durable relief to borrowers facing COVID-related stress. RBI's response to the situation arising out of COVID has been unprecedented. The measures taken by RBI are intended to deal with the specific situation of COVID and cannot obviously be permanent. And Shaktikanta Das also said that the RBI's response to COVID-19 has been unprecedented. As we heard him say there, the RBI is taking a long-term view of things today, tomorrow, 1 year ahead. That's the measures. The measures taken by the RBI are intended to deal with this specific situation that is arising out of COVID-19. Post-containment of COVID, a very careful trajectory needs to be followed for orderly unwinding of the various counter-cyclical measures taken by the RBI. The RBI
has taken or is taking a long-term view of things and not just thinking about tomorrow. We do think about today, we do think about tomorrow, we do think about day after, we also think about 1 year ahead or 2 year ahead, what next. And we'll go across now to listen to the Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, who's addressing the Atmanirbhar Bharat on India's defence industry outreach webinar. Developing defence product is a highly rewarding but a long, complex and a rather difficult journey. We have a very strong private sector and we can leverage our market access to make India a global hub for design and manufacture of defence equipment and further integrate into the global supply chain. In fact, India today is a software and IT powerhouse. Most of our requirements can be realized indigenously. Startups hold the key to innovative technologies. The academia too has shown great enthusiasm and has been contributing with innovative and forward-looking solutions and volunteering as incubators. The MSMEs are the bedrock of Tier 2 and Tier 3 of the supply chain. The complex subsystems, sub-assemblies are produced by them in bulk as per their core competencies and field of specialization. MSMEs are being provided the necessary push by the government through simplification of the Make-2 procedure, change in definition of MSMEs, projects with prototype cost of less than 3 crores and projects less than 50 crores are being reserved exclusively for the MSMEs and startups and such like measures. The aggregators are the manufacturers of the products. They in turn are being given the necessary support and being provided with the confidence to invest majority in long-term projects. Trial and testing facilities have been made available. Defence corridors with incentives to the industry have been also opened up. The Department of Military Affairs and the services remain committed to hand-holding our industry. A complete ecological system has been developed around the DPSUs, the DRDO, the ordnance factories, with MSMEs being their tiered partners. DRDO has also developed industry-friendly patent policy for TOT to the industry. The armed forces through their organizations such as the Army Design Bureau, Directorate of Acquisition for the Air Force, Directorate of Indigenization, Indian Navy, and Weapons Electronic System Engineering Establishment, that is WESI, have been acting as very important conduits between the armed forces and the industry. Now, looking at the way ahead, I would like to highlight two facets. That is, what is it that we ask of the industry and what on our part from the Ministry of Defence we will do to support them. Well, talking about what we wish from the industry is to lead innovation and become a very key part of strategy to enable technologically superior indigenization. Invest in research and development in the field of diverse technologies, especially in the arena of niche and disruptive technologies. Utilize and exploit the R&D of DRDO and partner with them for mutual. Well, that was the Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, who's addressing the webinar, which has been organized by FICCI and the Ministry of Defence, in which the Defence Minister will be addressing in a short while about Atmanirbhar Bharat and the role of the private sector in defence production. And we shall be going live once again when the Defence Minister speaks. Moving ahead then with this bulletin, a team from New Delhi consisting of 6 officials is all set to visit Mumbai to investigate the drug networks pertaining to Sushant Singh Rajput's death case. Now, an official from the Narcotics Control Bureau said that the agency will work with its Mumbai counterparts to probe the network. The NCB had already filed a case on Wednesday under various sections of the Narcotics Drug and Psychotropic Substance Act against Riya Chakrabarti and others. Riya is also the key accused in the Sushant Singh alleged suicide case. However, she has not been questioned by the agency so far. The Enforcement Directorate has issued fresh summons to Indrajit Chakrabarti, the father of Riya, for questioning. He had earlier been questioned in this case. Meanwhile, Sushant Singh's father has alleged that Riya Chakrabarti has killed his son, I beg your pardon.
रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। The central team that arrived yesterday in Assam, they are taking stock of the flood-hit areas of 7 districts in Assam: Nagaon, Golaghat, Lakhimpur, Majuli in Upper Assam, and Golpara, Bongaigaon, and Barpeta in Lower Assam. So this team comprises 2 members each, and they're covering these affected districts. And after returning, the team will hold discussions with the Chief Secretary and other senior officials of the concerned department. The 6-member central team had held a review meeting on Wednesday evening with the senior officials of the Revenue Department, the Disaster Management Authority, and the Central Water Commission at the Janta Bhavan, which is in Guwahati. And the meeting was chaired by the Additional Chief Secretary, Revenue Department, Jishnu Barua. A few hours of heavy rainfall early on Wednesday wreaked havoc in many parts of Jammu. While streets were inundated, floodwater entered many houses and shops in areas like Manjakot in Rajouri, Rajbagh in Kathua, Chatta and Nanak Nagar. So the Jammu-Srinagar National Highway is also closed for the 3rd consecutive day today due to the landslides, and also the sinking road in Dhalwas, and also shooting stones in Pantial, which is in Ramban. Flash floods in the stream washed away a bridge on the outskirts of Jammu. Dozens of thatched hutments were damaged due to an increase in water level in the Tavi River and other streams. Heavy overnight rainfall triggered fresh landslides as well. Rescue operations are underway as the floods continue to hamper daily life. In view of the heavy rains over the past 12 hours in most parts of Jammu region, authorities have issued an alert advising people not to move close to any water body and to contact the police in case they need any help. A cloudburst has occurred in the hill area of Nihargadu, which the Nihargadu shrine, which is in Gadsa Valley of the district of Kulu in Himachal Pradesh. It's caused heavy damage. Debris and water came down from the hill, which has completely destroyed the holy site. At the same time, due to the heavy rains, a large amount of water from the hill area, Ort Tunnel, due to which traffic has been disrupted. There has been also a large number of vehicles which have been lined up there because of queues on both sides, causing traffic disruptions. Let's take a look at the update of COVID-19 from across the country. The recovery rate has crossed 76%. The case fatality rate has dropped to 1.83%. 56,013 recoveries were recorded yesterday, taking the cumulative total of recovered patients to 25,23,771. With this, the recovery rate stands at 76.24%. India's three-pronged strategy, test, trace and treat, is proving to be successful. The fatality rate has dropped to 1.83%. 60,472 deaths were recorded so far. The number of COVID-19 cases in India stands at 7,25,991, which is 21.93% of the total cases reported so far. Remarkably, many states and union territories have performed better with more encouraging figures than the national average and recovery rate and the fatality rate. Early identification through testing, comprehensive surveillance and contact tracing, and also the focus on timely and efficient treatment of patients. All these three have ensured high number of speedy recoveries. This has also kept the case fatality rate low. Meanwhile, according to the Indian Council of Medical Research, the total number of samples tested on the 26th of August till now is 3,85,76,510 and 9,24,998 samples were tested yesterday. The West Bengal government has extended the bi-weekly lockdown in the state till the middle of September. The state will observe a complete lockdown on the 17th, 11th, on the 7th, 11th and the 12th of September. Meanwhile,
The state government has partially relaxed restriction on domestic flights from the 6 COVID-19 hotspot states to Kolkata from September 1. Flights from Delhi, Mumbai, Pune, Nagpur, Chennai and Ahmedabad can come to the state thrice a week. However, flight operations will remain suspended on lockdown days. And as we said, let's go across now live to that webinar which is being addressed by the Defence Minister Rajnath Singh. और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस इंडस्ट्री आउटरीच वेबिनार में मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी के बीच आने में जो मुझे खुशी हुई है उसे भी अभिव्यक्त करता हूं। देवियों सज्जनों, इस वेबिनार में जो विचार विमर्श होंगे, शायद माननीय प्रधानमंत्री का हमें जो मार्गदर्शन मिलेगा वह डिफेंस सेक्टर समेत समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होगा। मैं इस वेबिनार के आयोजकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वर्तमान समय में हमारा देश एक गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोविड-19 के प्रकोप से देश और दुनिया का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है। जाहिर है हमारी इंडस्ट्री भी इसका अपवाद नहीं है। फिक्की ने अपने रिसेंट सर्वे में करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें जीडीपी ग्रोथ को -4.5% दर्शाया है। ये निश्चित एक चिंताजनक है और लगभग इसी तरह के विचार दूसरे इंस्टीट्यूशन द्वारा भी प्रकट किए गए हैं। न केवल फाइनेंशियल बल्कि सोशल और कल्चरल लेवल पर भी हम एक अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी स्थिति में समस्याओं से निपटने के लिए यह आयोजन हमारी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट को दर्शाता है। आइए हम संकल्प लें, यह वेबिनार एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यह मंच हमें एक अवसर देता है जहां हम और आप साथ बैठकर आपस में विचार करते हुए नए रास्ते तलाश सकें और हमारे द्वारा लिए गए प्रोएक्टिव इनिशिएटिव्स और उन पर आपके रेस्पॉन्सेज के साथ चलते हुए हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। साथियों, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास आज़ादी के साथ ही हमने शुरू कर दिए थे। आत्मनिर्भरता की भावना हमारे समाज, हमारी शिक्षा और हमारे संस्कारों में हमेशा से मौजूद रही है। यह हमारी परंपरा से लेकर आधुनिक समय तक हमारे अंग के रूप में विद्यमान रही है। यह वेदों से लेकर विवेकानंद जी तथा गीता से लेकर गांधी जी तक और उपनिषदों से लेकर उपाध्याय जी यानी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की चर्चा करना चाहता हूं तक यह विद्यमान रही है। सभी ने, वह चाहे हमारे महापुरुष रहे हों या हमारी सरकारें, अपने अपने तरीके से स्वावलंबन यानी सेल्फ रिलायंस के महत्व को स्वीकार किया है। परंतु पिछले कुछ समय में हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर आत्मनिर्भरता पर जो बल दिया गया है वह अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व है। साथियों, आत्मनिर्भरता वास्तव में हमारे आत्मविश्वास व संबल का एक दूसरा स्वरूप है। हमारे लिए आत्मनिर्भरता का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अलग नहीं होगा। स्वदेशी न तो अलगाव है, ना ही इसका ये अर्थ निकाला जाना चाहिए। हम भारत और संपूर्ण विश्व के विकास में अधिक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन देने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर होना यह एक राष्ट्रीय आह्वान है जिसे हमें एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में बदलने का भी संकल्प लेना होगा। साथियों, सरकार ने डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई बोल्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना, ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 74% एफडीआई अलाउ करने का फैसला यह शामिल है। और इस कड़ी में हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया गया है और रक्षा मंत्रालय ने 101 डिफेंस आइटम्स की एक नेगेटिव लिस्ट जारी की है। आप सबकी जानकारी में है, एक निश्चित अवधि के बाद इन आइटम का किसी भी सूरत में
बाहर से खरीदारी नहीं होगी। और यह लिस्ट एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री को बदल देने की पूरी क्षमता है। 101 आइटम्स की इस लिस्ट में बस छोटे छोटे कलपुर्जे ही शामिल नहीं हैं, बल्कि वारफेयर सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स, कम्बैट व्हीकल्स आदि भी शामिल हैं। यह लिस्ट एक शुरुआत भर है जिससे आने वाले समय में अनुमानित रूप से अप्रॉक्सीमेटली 1.40 लाख करोड़ की खरीदारी डोमेस्टिकली की जाएगी। इसी तरह रक्षा मंत्रालय ने पहली बार एक बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है। इस आने वाली पॉलिसी में कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा। पॉलिसी के आधार पर हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज की ग्रेटर विजिबिलिटी पर काम करेंगे, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को आर्म्ड फोर्सेज की डिमांड के बारे में पता चल सके। इसके लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर की व्यवस्था होगी और हम प्रोक्योरमेंट के लिए एलोकेटेड बजट में पर ईयर 15% की बढ़ोतरी भी करेंगे। हम एक एरो इंजन कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना करेंगे। साथ ही मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल जिसे MRO कहते हैं और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देंगे। और इस पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट पर खास ध्यान देते हुए 2025 तक हम रेवेन्यू का 25% एक्सपोर्ट का टारगेट पाने का भी प्रयास करेंगे। यह पॉलिसी 2025 तक लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। ऐसी उम्मीद है कि यह पॉलिसी वर्तमान में तो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, साथ ही आने वाले लंबे समय तक इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक रोड मैप भी प्रदान करेगी। इसी तरह हमने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल डोमेस्टिक वेंडर से खरीदारी करने के लिए अलग कर दिया है। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए यह राशि लगभग 52,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। आत्मनिर्भरता की ओर हमने एक और कदम बढ़ाते हुए अपनी 2016 की डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास किया है। एक नई ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को सभी स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स के लिए पब्लिक डोमेन में डाला गया है। डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज की इंकरेजमेंट के लिए इसमें कुछ अहम प्रोविजंस भी डाले गए। नई बाई ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैटेगरी तथा मेक 3 प्रोसीजर, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ICT एंड लीजिंग पर नए चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं। हमारे एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल प्रोविजंस जैसे IDEX, मेक 2 में जरूरी परिवर्तन भी लाए गए हैं। इंडस्ट्रीज के लिए प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स को सरल बनाने तथा टाइमलाइंस को घटाने पर भी खास ध्यान दिया गया है। साथियों, यह केवल हाल के कुछ उपाय हैं जो सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए किए गए हैं। इन उपायों और प्रयासों की एक लंबी लिस्ट है जिसे सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए हैं। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अन्य सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से काफी अलग है, क्योंकि इसमें स्टेक्स हायर है और जेस्टेशन पीरियड लंबा है और टेक्नोलॉजी कटिंग एज है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल कैपिटल के निर्माण के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता होती है। साथियों, इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज के सामने ऑर्डर्स एश्योरेंस की भी समस्या आती है और इंडस्ट्रीज के लोग इससे अच्छी तरह परिचित हैं, जिसके लिए भी हमने फ्रिजन पोर्टल जैसे कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसके साथ भी हमें प्रयास करना होगा कि हमारी इंडस्ट्री ग्लोबल कंपनीज के साथ कंपटीशन में आगे बढ़े और नए मार्केट में अपनी पहुंच भी बनाए। हमारे कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव प्रयासों से हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड के लक्ष्य को भी जल्दी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यह लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो आप सभी के सहयोग से ही इस लक्ष्य को हम प्राप्त करने में कामयाब होंगे। मैं एक बार फिर इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए फिक्की, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और रक्षा मंत्रालय को अपनी ओर से बधाई देता हूं और वेबिनार की सफलता के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। Well, that was the Defence Minister Rajnath Singh addressing a webinar on defence production and the role of the private sector and in Atmanirbhar Bharat, and he spoke about the bold reforms that the government has taken about the defence corridors in Uttar Pradesh and in Tamil Nadu, which have been created, about 101 defence items which are now on the negative list. So there's a scope for production of all these items here in India, integrated platforms, vehicles, defence production and export promotion policy also on the anvil. Now moving on to our next story, the Supreme Court has reserved its order on Vijay Mallya's review plea. The review plea of Vijay Mallya was filed in the Apex Court on its 2017 judgment holding him guilty of contempt of court. Now the Apex Court had held him guilty of contempt for not disclosing full account of his assets in contravention of the court order. He was also found guilty of violating the court order for transferring his funds offshore when there was a restraining order against any such withdrawal. And with that, we conclude this bulletin. Thank you very much for being with us. Namaskar.